I was saying that, we are experiencing one of the worst health tragedies, and it's not just a health tragedy, it's a humanitarian crisis now. And even as we speak, the worldwide figure stands at 2.1 million positive cases and around 1.5 lakh deaths. So it's global, and the impact of this was terrible in endemically poorer region like ours, especially after the lockdown. Most are very disturbed about the condition of the daily wage earners, some of who turned up to our offices even, and that's how our colleagues got more disturbed about this whole thing that was happening. Many of us were anxious about the migrants returning from COVID-affected cities with nothing in their pockets, and we were also concerned about the possible contamination as they were mixing with the resident villagers. Honestly speaking, we were also a lot of confused. Is this our work? We were unsure about the transmission dynamics of this virus in the Indian peninsula. Sometimes we hear it's warm, so we need not do much. So we were worried if is it temporary, is it going to change the very nature of our development practice? We were having fear of contracting ourselves. I know still some of us, just got into it. So while initially our colleagues were doing whatever they could by means of sharing what they heard in the TV or WhatsApp and helping federations to access funds for their own support, but soon we realized that the scale of problem requires massive, intensive, focused engagement. And we then decided to put our heads around involving the entire organization. Every unit and every Pradhanite is now involved. And we had done series of, these kind of a con call, Zoom calls and all. And we put our head and we came up with a robust, COVID-19 response program, which stands on a 8-point strategy bucket. And, I was hearing Vijayanand sir the other day, Kerala has a very robust welfare state and again robust primary health system. Now we are not so blessed to we had to start with a very weak governance systems, unfortunately. So we had to come up with our own way of doing things. So these are our. I just want to put the 8 strategy buckets. Let's say. So first is awareness raising, and so what we realized was that there were 3 kinds of villages. One village where people didn't know anything about this COVID thing. The other villages there were a lot of misinformation. मतलब कहीं पे ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ भूकंप आने वाला है, हम लोग को सबको दूर दूर रहना है. कुछ गांव में आया था कि कुछ एक फूल चाइना से निकला है, वो फूल का मंजर हम लोग का नाक में जाएगा तो ये हो जाए. मतलब इस तरह का तरह तरह का. Our colleagues will tell you more stories about that. So we then, and the state was not active. So I'm talking about in the mid-March, 15 March के आसपास का time है, when we were beginning to realize the intensity of the program. So we did 3 things, and we are doing 3 things. Is that flex में, leaflets में और loudspeaker में लोग मैंने इस तरह के गाड़ियों में जो ऑटो टेम्पो टाइप के गाड़ियों में recorded messages को लेके हम लोग गांव में communicate कर रहे थे. That we did, but then we realized that was also not complete, and it required that there has to be a 2-way communication, because administration की तरफ से भी बहुत सारा इस तरह का announcements होता है, but people don't take it seriously, or people need more discussion. So our colleagues were doing, we had a FAQ, how do we dialogues at the 15-minute session with our Gram Pradhans, our Panchayat presidents, our federation leaders, our community resource persons. This is something that we found that because of our long-standing association with the collectives, it did work, because there was a lot of hesitation in sending people to quarantine homes, adopting a new set of behavior. Even SHG meetings were going on, hearts were going on, weddings were going on, but it took a lot of this 2-way communication to restore that. The second important strategy is this surveillance and enumeration. So we had very low testing in our region, so we were not sure, but then people were coming from COVID affected areas, Bombay, Kerala, Bangalore, Delhi, and one of the biggest anxiety was how do we handle this. So there was a rigorous surveillance and enumeration system. So all our CRPs who were Pashu Sakhis, Krishi Sakhis,
bank mitras. We had nothing for them to do at this time. So we converted them into COVID campaign volunteers. So in each block, we had around 100 to 115 COVID campaign volunteers who were trained to on COVID, what are the consequences, and we had a detailed village data keeping mechanism. मतलब पिछले 24 घंटों में कितने लोग बाहर से आए हैं और कहाँ से आए हैं, इनमें से कितने सिम्टमिक है, कितने एसिम्टमिक है, कितने लोगों को कोविड टाइप का सिम्टम्स दिख रहा है पिछले 24 घंटों में, कितने लोग ऐसे हैं जो हंगर एंड सेमी हंगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं. इस तरह का हम लोगों ने डाटा ट्रैकिंग करना शुरू किया एंड वी एक्चुअली फेड दिस इनटू द ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज आवर कलीग्स वर वर्किंग with the block administration as a part of the block control rooms in all these states. So we had daily meetings with them. The third important strategy was supporting quarantine centers and community kitchen. Here again, we started much early than the state actually started because there was a project in one of our locations in Gumla where we were working with in a PRI CBO approach. And when these concerns were shared and they realized that we really need to quarantine our people and then there was no state mechanism was not there. However, our Gram Panchayat elected representatives were so concerned that that they opened up their own panchayat offices and converted them into quarantine homes with beds and proper hygiene things, and which became again a state model. And it was so inspiring to see that act from the communities. Then the other important thing that we have in our strategy bucket is protection kits. So when because even professionals also we were worried कि बीमारी है क्या, कितना फैलेगा, हम कितना बाहर निकलेंगे, मास्क पहनना जरूरी है नहीं है. तो इस तरह के एक बड़ा काम के लिए there was a lot of hesitation of fear of contracting. So this one of the important strategies and a lot of budgeting that we have done is in procuring masks, head covers, gloves, sanitizers, so that we can go and work with the communities with certain level of confidence. So that's the other strategy. Then the next was attending to vulnerable. So as I was telling, lot of families जो ईटा भट्टा में काम कर रहे थे, जो होटलों में काम कर रहे थे, जो फार्मिंग सिस्टम में थे, उनको बहुत दिक्कत नहीं हुआ. लेकिन हमारे कलीग्स ऐसे बहुत सारे लोग से मिले जो बहुत ही खराब स्थिति में थे. So we then actually said it is very important that we give them a food kit support for the next 14 days. So that is one of the biggest program that currently we are doing. Then there was this whole concern that कि हमारे जितने blocks में जो federation leaders और community members अपने जो migrants जो stranded थे because of this lockdown, they were all in different places. So we were getting frantic calls. So we said we created a team of people of 12 people, and this is in Jharkhand, but then all states did do that. So we worked through the state helpline system as well as non-state actors methodologies, identifying different NGOs and volunteer organizations supporting in the destination states. Our colleagues will be detailing that. I'll not take much time. And the seventh strategy was restoring agriculture supply chain. So we were not expecting a lockdown. So there was a lot of rabi crops and which were there was a order that आप harvesting नहीं कर सकते, आप लेके नहीं आ सकते. There are some videos of our colleagues who had posted that how police was actually attacking a couple who came with their bhindi to the local bazaar. So we were worried, and then we got in touch with the district agriculture officer, the collector, and issued passes to the local traders. And इस तरह का announcement कर देते थे कि इतना तारीख को 8 बजे से 11 बजे आपको माने मोइन खान का गाड़ी है, सफारी इसका नंबर ये है, and आप लेके आ सकते हैं अपना प्रोड्यूसर. So we actually helped in 32 blocks में ये सप्लाई चेन को रिस्टोर करने के लिए हम लोगों ने काम किया. Of course that work is over now. Summer crops इतना नहीं है इस region में कि वो इतना बड़ा issue है about. And finally, the work that we did is, colleagues will be telling, is we work very closely with the local administration, the district administration, block administration, and the panchayat and federations. So that's about our strategy. More you will hear from our colleagues. So the resolution as we engage is that we will guard all our 7,259 villages daily, household-wise. Our commitment is that we will strive for zero mortality and zero hunger in our villages. Each of us have taken that personal responsibility of our villages through our volunteers and our SHG collectives. Fortunately, our efforts to mobilize funds also yielded quick results.
The largest being the Azim Primji Philanthropic Initiative of 14 crore support for all the 66 blocks that we are working, which has also given a lot of confidence that we will be able to move forward in our goals that we have set for ourselves. We are committed ourselves for COVID response, as I said, in this over 7,000 villages in 66 blocks in 25 districts in 7 states. As of yesterday, we have reached 4,556 villages with over 4,000 volunteers and 50 federations supporting us. We have supported over 29,000 vulnerable households with food kits, and we are directly engaged in 57 quarantine centers, 642 community kitchens, and we have arranged protection kits for over 8,000 cadres, households, and frontline functionaries. And we have supported close to 10,000 migrants in these destination states. We also have contributed to restoring agriculture supply chain, as I said, in 32 blocks. Though it's with the awesome wonder that, you know, we look back and see that how the last weeks have been for us, working in an entirely different program, contour, and fashion in our work habits. But frankly speaking, now this is our group, I can say that it has been at the cost of pushing us out of our comfort zones, challenging our own development assumptions, transcending our scope and definition of practice, and confronting each other with hard questions. Honestly, it has been a moral question for all of us not to engage. And I am simply amazed at the innovativeness and the resilience with which PRADAN reimagines itself to be with and for the community, as Naren said. So I'll end my monologue here, and I'll request our colleagues from different states to share their experience. Good morning. I am Prakash from PRADAN Palkot team of South Chota Nagpur Development Cluster, and I am sharing the experiences of Jharkhand, what we did now doing to respond to COVID-19 pandemic. Actually, as Binju narrated, 8-point strategy. तो जैसे कि अवेयरनेस क्रिएशन में बोल रहे थे, तो हम लोगों ने जो कंटेंट लिया वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से लिया और उनको लोकल भाषा में, जैसे एनसीडीसी में, एसपीडीसी में, खूंटी जिला में, उसको लोकल भाषा में कन्वर्ट किया और ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उसका अप्रूवल लिया और इस तरह के जो इंटीरियर विलेज है वहाँ क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग क्या मीन करता है, इस तरह का क्वारंटाइन का क्या जरूरत है, इस तरह का एक लार्ज स्केल अवेयरनेस किए हैं। दूसरा जो बिंदु बोल रहे थे, वल्नरेबल को लेके यहाँ पे काफी काम किया गया। एक्चुअली हम लोग जो विलेज एन्यूमरेटर थे उसके माध्यम से जब डाटा लिए तो एक एक ब्लॉक में 2,500 से 3,000 ऐसे लोग आए जो जिसके पास राशन कार्ड भी नहीं है, ओल्ड एज के लोग हैं, सिंगल हैं, विडो हैं, काफी दिनों से बीमार हैं और उनको एक सपोर्ट करना काफी जरूरत था। नो बडी गोज हंग्री, इस तरह का एक सेट करके पूरा ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, सीबीओ, सीएसओ, लोकल पर्सन सब मिल के आए और इनको सपोर्ट करने का हम लोगों ने पहला कदम उठाया। उसमें पहला था कि इस तरह के झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा भी एक एक पंचायत को 10,000 रुपया करके इमरजेंसी फंड दिया गया था, तो ब्लॉक से एडवोकेसी करके उस पैसा को जल्दी से पंचायत में पहुंचाए और वहां से जो डेटा आया था इस तरह के वल्नरेबल लोगों को, उनको सपोर्ट किया गया। लेकिन इससे हम लोग 15%, 20% इस तरह के लोगों को ही सपोर्ट कर पाए थे, तो काफी बड़ा संख्या था। तो हम लोगों ने इस तरह का एक कंट्रीब्यूशन का सेट किया। तो जितने भी प्रधानाइट थे भी, लोकल एमिनेंट पर्सन थे, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, सीबीओस के लोग थे, इस तरह का गुमला और अलग जगहों में इस तरह का हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया। तो विद इन 3-4 डेज में करीब 6 से 7 लाख रुपया हम लोग इस तरह का जमा कर पाए और इस तरह का बल्क में फूड किट लाके इस तरह का सपोर्ट कर पाए। इसी बीच में बिंजू, नरेन ये सब एपीपीआई के साथ इंगेज थे। आई ऑल्सो गोट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ एपीपीआई पर्सन टू शेयर आवर ग्रास रूट एक्सपीरियंसेस एंड फाइनली दे कन्विंस्ड और वो 5 करोड़ रुपया इस तरह करके झारखंड में फंड दिए। तो इसमें से बहुत सारी एक्टिविटी की है, उसमें एक मेजर था कि इस तरह का फूड किट इस तरह का वल्नरेबल को देना। जेएसएलपीएस की तरफ से भी हर ब्लॉक में इस तरह का कम्युनिटी किचन सेंटर बनाया गया, जहाँ एक एक पंचायत में 2-3 इस तरह का कम्युनिटी सेंटर बने। तो हम लोगों ने वीओ को आइडेंटिफाई करना, वहाँ पे हाइजीन कैसे करके मेंटेन हो, इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करके मेंटेन हो, इसमें हम लोग काम किए। तो अभी कम्युनिटी किचन के थ्रू से भी वल्नरेबल को हम लोग मदद पहुंचा पा रहे हैं। इस तरह का वेरियस ऑफ एक्टिविटीज से वल्नरेबल को एड्रेस हम लोग कर पाए हैं और अभी सबके पास इस तरह का फूड किट है और कुक्ड फूड भी मिला है। और जो बिंजू बोल रहे थे, पंचायत इसमें काफी आगे आया है झारखंड में, खासकर कोडरमा, हजारीबाग, इस तरह का बसिया का अगर एक्सपीरियंस बोलेंगे, जहाँ पे इस तरह का कोई क्वारंटाइन सेंटर का गाइडलाइन भी नहीं आया था,
लेकिन एफएफसी फंड से उन्होंने इस तरह का पंचायत में ही बेड रोल, बेड इस तरह का बंदोबस्त किया। हमारे जो एसएचजी के मेंबर्स थे उन्होंने इस तरह का चौकी चारपाई इस तरह का डोनेट किया, और पहला था कि जितने माइग्रेंट्स हैं उसको 14 दिन का क्वारंटाइन दिया जाए, जो काफी टफ था, लोग रहना नहीं चाहता था। लेकिन जहाँ पे पंचायत, ब्लॉक, प्रधान सब मिलके हम लोग लगे तो लोगों को इस तरह का हम लोग क्वारंटाइन कर पाए हैं। उसके बाद इस तरह का ब्लॉक में भी काफी स्पेस मिला, ब्लॉक कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, इस तरह के हमारे जो प्रोफेशनल थे उसका पार्ट बने, और ईच इवनिंग वो लोग पूरा स्ट्रेटेजी बनाया कि आज शाम को क्या करना, आज दिन भर क्या हुआ है, कल का क्या स्ट्रेटेजी हम लोग कर पाएंगे। तो वहां पे इस तरह का काम हुआ, जैसे पीपीई किट देना है तो N95 मास्क है, आशा वर्कर, इस तरह का आंगनवाड़ी सहिया जो कि क्वारंटाइन सेंटर में रहते हैं, पूरे बसिया में या और अन्य ब्लॉकों में झारखंड का सभी को मास्क देना है, इस तरह का मास्क मेकिंग भी शुरू हुआ है। तो इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी से झारखंड में हम लोग कुछ हद तक सपोर्ट कर पाए हैं, और अभी कंटिन्यूअस है कि अभी जो ये कोविड-19 के बाद में या इस तरह का लॉकडाउन के बाद में जो एग्रीकल्चर का ह्यूज प्रॉब्लम होने वाला है, तो उसकी फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करेंगे, इधर भी हम लोग काफी लगे हैं, और बहुत सारा एक्टिविटी है, लेकिन इट इज ऑल अबाउट फ्रॉम झारखंड। थैंक यू बिंजू। आई एम सेला फ्रॉम उड़ीसा। तो बेसिकली हम लोग कोविड-19 में उड़ीसा में जो भी कर रहे हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके एज पर गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट, एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ द गवर्नमेंट, तो उड़ीसा में हम लोग अभी 45 ब्लॉक्स को फोकस किए हैं। तो जिसमें हमारा 17 ब्लॉक्स है जो डायरेक्ट ऑपरेशनल एरिया में है, और 28 ब्लॉक्स हमारा थ्रू सीएसओ पार्टनर्स है। तो इसमें बेसिकली हम लोग इनिशियली एक 3000 विलेज का एक स्टेटस मैपिंग करने के लिए प्लान किए हैं, जिसमें अभी तक हमारे पास 1080 विलेज का एक प्रिलिमिनरी लेवल का डाटा है। कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो? या तो जिसमें एक तो फाइंडिंग जो है, जितना माइग्रेंट है, जो दोज हु आर स्टैंडर्ड आउटसाइड, it is 2 times of the migrants who have returned to the village, एक फाइंडिंग है। सेकंड है जो vulnerable household पर विलेज, जो एवरेज एक फाइंडिंग आ रहा है, तो 7 हाउसहोल्ड है। तो इसमें हमारा जो कोशिश रहा है कि हाउ टू ब्रिंग दिस टू द फोकस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और हम लोग ज्यादातर जो देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन वेरी प्रोएक्टिव टू रीच आउट दिस वल्नरेबल हाउसहोल्ड। तो कहाँ पर कोई जगह पर डिले हो रहा है, टू एड्रेस द हंगर एस्पेक्ट हम लोग मिनिमल ग्रोसरी किट कुछ जगह पर सपोर्ट कर रहे हैं, बट आवर प्राइमरी फोकस हैज बीन टू आइडेंटिफाई दिस वल्नरेबल हाउसहोल्ड एंड लिंक टू दिस हाउसहोल्ड टू द सोशल सिक्योरिटी नेट। इसके साथ साथ हम लोग फोकस किए हैं प्रिवेंशन और सेफ्टी मेजर के ऊपर, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ अवेयरनेस ऑन हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, ब्रिंगिंग अवेयरनेस ऑन दी हाई रिस्क ग्रुप, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ब्रिंगिंग फोकस ऑन क्वारंटाइन। तो ये जो एस्पेक्ट है, तो इसको कुछ जगह पर माइकिंग के प्रोसेस में, कुछ जगह पर डायरेक्ट प्रोफेशनल का इंफॉर्मेशन शेयरिंग एट द विलेज लेवल थ्रू फोन कॉल्स, तो उसमें हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट किए हैं। उसके साथ कुछ जगह पर हम लोग सैनिटरी किट, पीपीई मटेरियल, इस सब को भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं मिनिमल स्केल में। और एक जो इमर्जिंग इशू हमारा निकल के आया, जो हमारा एपीसी में जो वोमेन फार्मर है प्रोड्यूसर ग्रुप में, उनका स्टैंडिंग क्रॉप था फील्ड में, और वो भी पेरिशेबल है। और इतना जैसे लॉकडाउन हो गया, तो इसमें हम लोग हाउ टू डू मार्केटिंग अल्टरनेटिवली, उसके ऊपर थोड़ा हम लोग ट्राई आउट किए हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेटिव आइडियाज भी निकला है, जैसे भेज ऑन व्हील्स, तो जिसमें मोबाइल व्हीकल के थ्रू से वेजिटेबल को मतलब सेलिंग करा जा रहा है। और दूसरा है कि कुछ जो प्रोड्यूसर ग्रुप है, उनको डिस्ट्रिक्ट के तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पास मिला है, जो वोमेन प्रोड्यूसर ग्रुप्स, वो लोग कुछ जगह पर टाउन में, इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ आउटलेट करके वहां पर डायरेक्टली सेलिंग कर रहे हैं। उसके साथ जो बिग बायर्स है, उनके साथ भी हम लोग कॉन्टैक्ट करके कुछ जगह पर सेलिंग करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक्चुअली एक स्लाइड दिखाना चाह रही हूँ, जस्ट आई एम कनेक्टिंग टू दैट। सो दीज आर 3 स्ट्रैटेजीज, भेज ऑन व्हील एंड आउटलेट बाय प्रोड्यूसर ग्रुप्स एंड लिंकिंग वेजिटेबल्स टू बिग बायर्स। तो इसमें टोटल हम लोग इस लॉकडाउन पीरियड में 385 टन का वेजिटेबल सोल्ड कर पाए हैं, जिसका एक सोल्ड वैल्यू रहा है 53 लाख। तो दिस हैज बीन वन एस्पेक्ट। तो इसमें जो जॉइंटली अभी कोविड-19 का रेस्पॉन्स में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें
बेसिकली एक जियो और एनजीओ का जॉइंटली वर्क करने का एक स्पेस निकल रहा है। और हम लोग जो देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन वेरी फ्लेक्सिबल टू एडहॉक सम प्लान्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी पैड। और हम लोग बोल रहे हैं हाई रिस्क ग्रुप जो एजेड लोग है, बट रूरल एरिया में जो चिल्ड्रन है दे आर माल नोरिश्ड, दे आर ऑल्सो हाई रिस्क ग्रुप। तो मेकिंग सम अल्टरनेटिव प्लान लाइक सप्लाई ऑफ सम मिल्क पाउडर्स और सप्लीमेंटरी फूड टू द किड्स, इसके ऊपर भी कुछ ब्लॉक्स में काम हुआ है। तो ओवरऑल इस तरह का एक्सपीरियंस उड़ीसा में रहा है। उसके साथ अनदर एस्पेक्ट है कि देयर इज इंक्रीजिंग स्टिग्मा इन द कम्युनिटी, स्टिग्मा बिकॉज ऑफ द फियर, इट इज एपिडेमिक, देयर इज फियर, देयर इज एंजाइटी, also fear of being into isolation, fear of dying, fear of losing livelihood। तो इस तरह का जो स्टिग्मा एक कम्युनिटी में बढ़ रहा है, उसके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन, इंक्रीजिंग डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द माइग्रेंट। तो ये जो सोसाइटल ये जो चीज है अभी कम्युनिटी में, इसको हाउ टू डील विथ, तो उसमें हम लोग जो हमारा फेडरेशन है, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ बात कर रहे हैं हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड सो दैट दे कैन एंगेज विद दिस एस्पेक्ट एम्पैथेटिकली। So this is all from Odisha side. Thank you.